friends, welcome to my channel. So my dear students, class 10th chapter 3 English book English grammar subject verb agreement. Already I have explained the topic with proper explanation with proper example. I think all of you understood this. So in this video I will explain all the activities with proper explanation. So पिला माने मु भाबुची समस्त वीडियो टी देख एवं एक्सप्लेनेशन कोन कहूची ताकू बुझ जद्वारा कि तुम निजे निजे एग्जाम रे क्वेश्चन पढ़ले भी तुम माने करि परिबो. ओके, सो आउ गोटे पिला समस्त रिक्वेस्ट पिला माने जदि तुम मैंने फर्स्ट टाइम चैनल देखुच चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर एवं शेयर कर सो दैट एवरीबॉडी विल गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो. ओके, सो टाइम वेस्ट करबानी. नाउ वी विल स्टार्ट. सो लेट्स स्टार्ट. Subject verb agreement. Already we have explained all the rules. That is what is the meaning of the subject verb agreement. I have already explained the agreement between subject and verb. That is called subject verb agreement. आमे subject को देखिक रे आमे verb रे change करबा. ठीक अच्छे पिला माने मु सब तो कही से विषय रे एबे एक्सप्लेन करी से सब एक्सप्लेन मु करबिनी विथ द एक्टिविटीज. देखि एक्टिविटीज भितरे कोन कहूची ताकू देखिकरी आई विल एक्सप्लेन इट. ओके, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एक्टिविटी. First, this is the activity first in your grammar book. Choose the correct word, correct verb given in the brackets and rewrite the sentence. Okay, these are the some sentence and some verbs are given in the bracket. We have to choose the correct verb according to the subject. Okay, so first question, look at the first question. There is or are plenty of opportunities for the people of this region. So what I will use here. So आमे एठी फर्स्ट कोन देखा there. आमरा फर्स्ट रूल रे कहिची when there will be the subject. जेतेबेले there आम सब्जेक्ट रे थिबो आमे कोन करबा we will change the verb according to the noun coming after it. एठी देखिबा noun हमर कोन अछि job opportunities. So this is plural. Okay, so we can use are here. So there are plenty of opportunities, plenty of job opportunities for the people of this region. बुझियला पिला माने. Next come to this. There was or were plenty of room for improvement in her work. Look at this. What is the difference between two sentences? First sentence सेठी भी there अछि एठी भी there अछि किंतु एठी हमें कोन बसेबा plenty of room means this is not the rooms where we stay. It means space or chance. एठी कोन कहूची इम्प्रूवमेंट इन हर वर्क तार काम रे इम्प्रूवमेंट करिया पे ताको बहुत थरा चांस दिया जाइछि बहुत सारा चांस अछि तेनु as it is an uncountable noun so we know that uncountable noun always take the singular verb. बुझियला पिला माने ताला मेठी कोन बसेबा there was. Okay, plenty of room means हमर घर नुहे. This is the plenty of means space or chance for her improvement in her work. काम में improvement करिया पे बहुत सारा ताको चांस दिया जाउची so that it is an uncountable noun. We can use was. Okay, next 2 plus 2 is or 4. ए क्वेश्चन प्राय एग्जाम रे तमरा आसी थाए पिला माने ए जा होची ओटा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. ताले एठी हम कोन बसबा 2 plus 2 कोन हबो 2 plus 2 is. As it is an mathematical expression we take the singular verb. 2 plus 2 is 4. ओके, सेमती हमर पणिखिया सपोज हम जतो कहू इंग्लिश रे जतो हम कहू 2 2s are 4, 2 2s 2 3s are 6. So like this जतो हम मल्टीप्लिकेशन रे कहता 2 2s are not is. Okay, remember these two examples because this type of questions come in our exam. Okay, 2 2s are but 2 plus 2 is. Okay, next 70 kilometers is a long distance. एठी हम कोन कहू which is the subject 70 kilometers which is plural but आमे जानिचु जेते बेले गोटे कोन प्लूरालटा जति गोटे डिस्टेंस को बुझौथिबो कि गोटे किलोमीटर को बुझौथिबो किंतु से गोटे सिंगल यूनिट रे हम ताको काउंट करथिबा ता पाखरा हम कोन बसबा इज. ये प्लूराल हेले भी जेहेतु गोटे सिंगल यूनिट के से प्रेजेंट करूची आमे सेठी कोन बसबा इज. 70 kilometers is a long distance not are. Okay, so this is C. Okay, next कौन कला fish and chips is or are not so expensive as chicken and curry and rice. So here the rules, which rule is applies here? Two nouns joined by coordinating conjunction and but that represents a single item. जेतेबेले सिंगल आइटम को हमें बुझौची ताले हमें सेठी कोन बसेबा fish and curry is. Okay,
fish and curry is not are बट एक्सप्लेन्स द सेन्स एठी कौन कह बुझीगला पिला माने फिश एंड चिप्स ये गोटे सिंगल यूनिट की बुझेला आमर खाइबा बेले जतले खाउछु फिश आउ चिप्स ताकू आट ए टाइम मिसई करे हम खाउछु ना ताकू अलगा करछु कि दीटा मिसले गोटे सिंगल यूनिट होजी so that I can use here is fish and curry is not so expensive as chicken curry and rice. Okay, next a crowd G, this is very important. A crowd एठी आम पढ़ी रूल्स आम कौन कौच ए क्राउड थे आम सब कौन करवा सब आम कौन करवा वी विल टेक द सिंगुलर ए क्राउड ए हॉट रेजिमेंट ए सब गोटे ग्रुप को बुझाऊँ okay so in that case we use the singular verb a crowd has gathered in the street. Okay, the assembly was were divided on their issues. This is also very important questions here. Remember one this the assembly means a collective noun gote group को बुझेला but they divided their opinions. एठी जतो divide आसिला माने आखि बुझी कर तम सेठी कोन कर दबो where लगे दबो जदि डिवाइडेड न थिबो ताले समस्त गोटे मत को दउथिबे ताहले आमे सेठी कोन बसेबा was. As it is divided is given so answer will be the assembly were divided on the issue. The police already it is it is a plural noun. The police are chasing the burglar. Okay, J-I, the police is a plural noun so it will take the R as the verb. Then like this here her clothing amar achi amar rules re achi there are some nouns which are used as the singular and which are used as the plural. Here clothing is singular noun so we can say that here what we will use we use her clothing is waterproof. Okay, so this is activity 1 complete. Then now come to activity 2. Yes, so fill in the blanks with the appropriate auxiliary verbs. Either of the boys either of either of we take the singular आम जानी either of आम रूल्स जे देखिबा पिला माने टिके आम पछुक जीव either of एठी अछि हमर देख एठी कोन कहिछि either of जदि हमर क्वेश्चन रे आई देख so I each of ने एटा इज either हाँ either of the boys if a subject begins with either of neither of none of and followed by a plural noun or a pronoun the verb usually takes the singular. Either of जदि थिबो noun plural भी हो but we will take as the singular verb. बुझिला पिले either of neither of none ता पाखरे जहा थिले भी आमे कोन करिबा एठी कोन हम singular. So either of the boys has won a medal. So has तुम भाबु तो has काई बसेलु जेहेतु win the verb third form अछि so we can use has. Okay, so neither of those officers like this neither of officers neither of those officers is efficient. Okay, so like this one of his friend see one of his friend already kon habo one of his friend is a subject so it is singular so we use is singular verb. One of his friend is able to speak English fluently. Some honey is uncountable noun so some honey D hela amar kon habo D some honey is left okay so it is uncountable noun it will take the singular verb. Then the governor and the vice chancellor of the university the governor and the vice chancellor they are the two positions. Remember the governor and the chancellor of the university and the governor and the chancellor of the university they are two posts but single person is there one person will wear the two positions so we use the singular verb. एठी हमर अछि हम देखिबा एटी एग्जांपल ले देहि छी हमर एटी देखि देले त मनकर पिला माने क्लियर हे जिवो कोठी देहि छी लुक एट the vice president of India and the chairman of Rajya Sabha has these are the two posts but a single person will be hold this so here we will use the singular verb. Okay, but the vice president and the chancellor एठी देखो एठी आउटा केमिति तम आइडेंटिफाई करियो पिला माने जदी क्वेश्चन रे देखो the governor
एंड द चांसलर देछि कि नो जदि गोटे थर द आसिला माने दे आर द सिंगल पर्सन्स जदि एठी आस्ता द गवर्नर एंड द चांसलर ताला मेटी कोन करथांतु आर बसै थांतु बट द गोटे जगह द देछि माने ए सिंगल पर्सन द गवर्नर एंड द चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी हैज बीन ई हला कोन हैज बीन इनवाइटेड टू द फंक्शन देन तापरे हमरो 3/4 of the crop I mean पढ़ी previous time example है if the fraction is a subject if the subject is a fraction then we will take the noun coming after them so crop is uncountable noun ताला हमें कौन बसेबा एठी जेहेतु सिंगुलर वर्ब हमें बसेबा if हमें सिंगुलर वर्ब is कौन fraction is 3/4 of the crop is damaged by flood a great deal of money a great deal of money तापर जदि सिंगुलर नाउन थाए ताला में सिंगुलर वर्ब बसेबा जदि प्लूरल नाउन थिबो ताला में प्लूरल बसेबा मनी इज अनकाउंटेबल नाउन तापर ताहाला में कोन बसेबा a great deal of money is spent on his mother's treatment a whole regiment of next come to H a whole regiment of volunteers dash working there a whole regiment देखिए आम रूल्स रेटी कौन कहूँ a whole regiment है देख ये कौन देती आमर a crowd a flock of a group of a herd of a regiment of usually takes singular verb in spite of the fact that the noun coming after them is plural आम जहाँ थे भी जेहेतु ये ग्रुप को बुझे गोटे कलेक्टिव नाउन को बुझे आम ता पाखे सिंगुलर वर्ब ही बसेबा ताला हमर आंसर कौन हम ए ग्रुप a whole regiment of volunteers is working here H is working here okay next the number of scholarship dash increase this year I हला हमर कोन the number of is increase the number थला हम is बसेबा जदि a number अछि plural बसेबा एठी अछि हमर पिला माने rules देखो if we there is the a number will always take plural verb and the number is if the number is there we will take the singular verb so answer will be the number of scholarships is increased this year so these days moms this is also uncountable noun so we will take these steps moms is not at all difficult to cure okay so these are the questions of the activity 2 okay now come to activity 3 rewrite the sentence using the choosing the correct alternative given in the bracket first देखिए कौन देइछ हमर what he says about me do or does not affect me so first question में देखिए what he says here what he says subject की गोटे clause एठी हमर clause होची गोटे subject if it is a clause it is singular then it will take the singular verb what he says about me is not affect एठी हम देइछि पिला माने देखो जदि clause रु sentence start हेतिबो ठीक ताहला हमें कोन बसेबा देइछि हमर if the sentence starts with a clause देखो what he does that he is alive is good if the subject of a sentence is clause then the verb is singular जदि sentence ର subject टा clause अछि माने ताले आखि बुझी कि हमें कोन करबा singular verb नबा what he says about me this is a clause so it is a subject also so we will take what he says about me is correct so the verb will be does not affect me because the subject is a clause we know that clause पाखरे हमें सब बेले singular verb ही हमें यूज करथु जदि subject clause हेतिबो ताला हमें singular verb ही हमें यूज करबा okay next come to Ram as well as his friends this is also very important question Ram as well as his friends एठी देखिबा as well as लागि थला हमर कोन होची देखिबा जदि देखिछु दीटा नाउन जदि दोटा कनेक्टिव सहित यूज हेतो as well as आ कोन करता रूल्स अछि देखिबा as well as एठी देखिबा देखो not only what also ता पूर्वटा look at this if two words are linked the subject to the help of the connectives like as well as in addition to the verb agrees with the first word देखिए आम फास्ट वर्ड टा हमर कौन देछि ताकू देखि कि हम वर्ब एग्री करबा देखो राम as well as his friends एटी टू नाउन्स आर देयर राम इज ए नाउन एंड हिज फ्रेंड्स इज आल्सो नाउन बट कौन रूल्स हमर कौन कहछि जदि as well as थिबो हमें फास्ट नाउन को देखिबा फास्ट नाउन सिंगुलर अछि माने हम से वर्ब टा सिंगुलर हबो जदि फास्ट नाउन प्लूरल थिबो ताले वर्ब टा हमर प्लूरल हबो सो द राम as well as his friends likes to play football so likes will be the answer okay
नेक्स्ट कम टू नंबर 3 नाइदर रोज नर जस्मिन एठी हमर कोन हम नाइदर नोर लगे दीटा नाउन द्वारा जॉइंट हेची ताल वी सी द सेकंड नाउन का हम देखिबा नाइदर नर हम नाइदर नर लगले कोन देखिबा एठी जदी इफ द सेंटेंस इज जॉइंड बाय द नाइदर nor neither or nor and the number of persons the verb agrees with the nearer subject जदि neither or थिबो neither nor थिबो आ कोन कहछि not only but also थिबो then either or थिबो then the verb agrees with the nearest subject ता पाखरे verb पाखरे जो नाउन थिबो ताकू देखि हमें बसेबा देख neither rose nor jasmine was available in the market हैला बुझीला पिला माने हमरे जा जस्मिन हम जानछु सिंगुलर ता पाखरे हम कोन बसेबा सिंगुलर भर बसेबा ए पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स दिस इज आल्सो इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेनी टाइम्स कम्स इन योर एग्जाम ए पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स जदि केवल स्पेक्टेकल्स थांता ताला में प्लूरल वर्ब यूज करथांतु बट इफ देयर इज ए पेयर ऑफ शूज ए पेयर ऑफ गॉगल्स ए पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स देन एट दैट टाइम वी यूज द सिंगुलर वर्ब सो ए पेयर ऑफ सीजर्स वाज लाइंग ऑन द बेड बुझीला पिला माने द रिच एठी देखो एठी द रिच इट इज द रिच एठी कोन कहउची एटा गोटे एडजेक्टिव एंड इट शोज टू ए होल ग्रुप जदि गोटे एडजेक्टिव ता पूर्व द लागिथिबो एवं होल ग्रुप को बुझौथिबो इट शोज अबाउट द होल ग्रुप सो इट इज ए प्लूरल सो इट विल टेक द प्लूरल verbs okay the rich live in affluence सॉरी द रिच लिव इन एफ्लुएंस हाँ ठीक है बुझीगला पे आम रूल को देखी दिया तुम मन समस्त क्लीयर हो देख ये कौन कौची द रिच हैव ए लॉट ऑफ द ब्लाइंड नीड जदि गोटे आगु दी थब द थी एवं दैट इम्प्लाइज ए होल ग्रुप देन वी विल यूज द प्लूरल वर्ब्स सो व्हाट विल बी द आंसर द रिच लिव इन द एफ्लुएंस लिव से गले सिंगुलर हो लिव आम बसेबा 6 weeks is or are a long vacation for students 6 weeks एठी कौन कहूँ जिते 6 weeks कहला ता माने कौन इट इज ए सिंगुलर एंड सिंगुलर टाइम पीरियड सो इट विल टेक द जेहेतु प्लूरल वर्ड अच्छी बट इट कौन बुझाऊँ गोटे ग्रुप को बुझाऊँ गोटे पर्टिकुलर टाइम को बुझाऊँ गोटे पीरियड ऑफ टाइम को बुझाऊँ तेणु आम से कौन बसवा सिंगुलर नाउन आम बसैबा सो व्हाट विल बी द आंसर 6 weeks इज ए लॉन्ग वैकेशन फॉर स्टूडेंट्स योर ट्राउजर्स ये देख पिला माने ए से कौन थी ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स ता पाखे हम यूज बसैलु बट योर ट्राउजर्स आर टर्न माने चिरीगला सब ओके नेक्स्ट आई एम यंग एंड स्ट्रंग am not I or not it is also very question tag it हमर कौन बसेबा दिस इज वेरी इंपोर्टेंट सो माय डियर स्टूडेंट्स एटी कौन कहूँ आई एम यंग एंड स्ट्रंग एटी जिते आम कहूँ नेगेटिव जदि करवा जदि एपटे पॉजिटिव थी आम नेगेटिव करवा जदि नेगेटिव थी ताको आम क्वेश्चन टैग पॉजिटिव करवा हियर दिस इज द पॉजिटिव सेंस सो वी विल मेक इट नेगेटिव सेंस ओके सो आई एम यंग एंड स्ट्रंग सो व्हाट विल बी हियर पिला माने आम जानिछु जो क्वेश्चन टैग करवा ऑक्सिलरी वर्बटा सब बाहर को आगू को आसो किंतु जेहेतु ये आम अच्छे ऑक्सिलरी वर्ब आम रु स्टार्ट हम ना तेणु जदि आम थी आम कौन कर आर नॉट ये कौन हम आम पिला माने आर नॉट आई ओके सो आंसर विल बी आर नॉट आई दिस विल बी द आंसर रिमेंबर दिस ओके नेक्स्ट इट इज यू हु has or have insulted me एटी कौन अच्छी it is you if there is a relative clause in the sentence then we will see before the relative pronoun what is there if the subject is relative pronoun पाखरे if the subject is plural we will take the plural verb if the subject is singular we will take the singular verb देखिबा एठी कौन कहछि गोटे if it is you relative clause एटा it is you who रिलेटिव क्लॉज पूर्व रिलेटिव प्रोनाउन पूर्व आमर कौन अच्छी यू ताने ये कौन बसेबा आम हाव बसवा इट इज यू हु हैव इंसल्टेड मी ओके सो दिस इज द एक्टिविटी 3 completed नेक्स्ट कम टू एक्टिविटी 4 चूज द करेक्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द ब्रैकेट एंड रीराइट द सेंटेंस फर्स्ट देयर इज और आर पीपल वेटिंग टू सी यू एटी आम देखीचु फास्ट कौन कहूँ देखिए आम देयर जदि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट थी ताले कौन कहूँ the main subject is people okay देखा
एठी आम कौन कहूँ देयर एठी आम लगुच सब्जेक्ट भाया बट इट इज नॉट ए सब्जेक्ट आम को कौन कहूँ डमी सब्जेक्ट बोली आम कही था कौन सब्जेक्ट ना इट इज नोन एज द डमी सब्जेक्ट बट दियर रियल सब्जेक्ट इज पीपुल ताले आम कौन करवा किंतु आम रूल्स आम एठी कौन कहूँ जदि देयरटा इंट्रोडक्टरी होता तापर नाउन आमर कौन देछि ताकू देखि आम करवा ताले एठी आम कौन हम कहूँ जे देयर देहचु पीपुल अच्छी ताले आम कौन करवा देयर आर पीपुल वेटिंग टू सी यू ओके देयर आर पीपुल वेटिंग टू सी यू बुझीगला पिला माने नेक्स्ट कम टू देन आवर्स इज और आर ए ग्रेट नेशन इज नॉट इट और आर नॉट दे इटी ताला कौन हम आवर्स मीन्स आवर कंट्री सो इट इज आवर्स इज ए ग्रेट नेशन ताला आम कौन कहूँ ताला एठी कौन हम इज आवर्स कंट्री इज ए ग्रेट नेशन जेहेतु इज अच्छी ताला आम क्वेश्चन टैग कले आम कौन बसवा इज नॉट इट ओके नेक्स्ट then see the police already I have completed the police is a noun which is a plural noun I can say that this is a plural noun ताला में कौन बसेबा एठी the police have a difficult job the police have a difficult job next come to D a lot of cattle was or were grazing in the field so my dear students a lot of jodi agru thibo then we will see the noun coming after them cattle is a plural noun so we will say that a lot of cattle were grazing in the field okay were grazing in the field तापर देखिए कौन दूसरी द नंबर ई द यूथ इज और आर सो सिंसियर एठी यूथ रा कौन कला टोटाली गोटे एडजेक्टिव रे एटा एडजेक्टिव द यूथ मीन्स द टोटल मास को हमें बुझौजी जेतो हमें जानिचु पूर्व हमें कहलु जेतो रीच जेतो कलु द रीच द ब्लाइंड जेतो गोटे ग्रुप को बुझौथि हमें ता पाखरे कौन बसेबा प्लूराल बसेबा ताला हम एठी हम आंसर कौन हबो द यूथ आर not so sincere okay so answer will be r the youth are not so sincere next come to question f the youth was or were more serious than his uncle एठी देखो एठी कौन कहूँ एठी टोटल ग्रुप को बुझौतला बट हियर द यूथ मीन्स ए यंग बॉय इट इज कंपेयर्ड विथ हिज अंकल ताले एठी हम कौन बसेबो जेहेतु ताहा सहित अंकल से जनक सहित कंपेयर होची ताले हम एठी कौन करबा वाज द यूथ वाज मोर सीरियस दैन हिज अंकल ओके सेठी कौन पूरा टोटल होल ग्रुप को बुझुतला बेले हम प्लूराल बसे देलु बट हियर द यूथ मीन्स ए यंग बॉय व्हिच इज कंपेयर्ड विथ हिज अंकल सो वी कैन इट इज ए सिंगुलर सो वी कैन यूज इट सिंगुलर वर्ब ill news travel or travels fast ill news means it is an uncountable noun and we know that always uncountable noun take the singular verb so ill news travels very fast moms it is also uncountable noun moms is very unpleasant okay then bacteria of harmful kind causes disease एटा पिला माने बुझ एटी कोन कहूची एटा बहुत इंपोर्टेंट एटा होची बैक्टेरिया इज ए प्लूरल फॉर्म तार बैक्टेरिया माने एटा होची एटा प्लूरल फॉर्म होची तार सिंगुलर कोन होचे बैक्टेरियम दिस इज इन सिंगुलर फॉर्म इट इज ए कलेक्टिव नाउन सो इट सेज अबाउट ए ग्रुप or a single unit so it will take the singular verb so we can say that the bacteria of harmful kind causes this disease बुझिला पिला पिला माने एठी कोन होची बैक्टेरिया माने ये होची गोटे प्लूरल नाउन अछि किंतु एठी बैक्टेरिया ऑफ द हार्मफुल एटा टोटल गोटे ग्रुप को बुझेला ठीक अछि पिला माने तेणु गोटे जेहेतु ग्रुप को बुझौछि दैट विल टेक द सिंगुलर वर्ब सो द बैक्टेरिया ऑफ हार्मफुल काइंड causes disease okay so there is a pair of spectacles on the shelf एठी हमें कौन करबा ए पेयर ऑफ स्पेक्टाकल्स देछि माने हम कहिछि पूर्वरु there is a dummy subject so we can say that एठी हमें कौन बसेबा देखो माने there first ला there introductory अछि किंतु हमर मेन सब्जेक्ट के ए spectacles ए पेयर ऑफ spectacles so when there is a pair of spectacles आखि बुझी कर हम सेठी कौन कर देबा सिंगुलर वर्ब बा is हमें लगेई परिबा so what will be the answer there is a pair of spectacles on that shelf okay so my dear students these are the activities I have already explained if you have any doubt then write in the comment box I will explain it okay so before going to my dear students पिला माने जदि भी के चैनल सब्सक्राइब न कर सब्सक्राइब कर देन नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करी तापर तुम पाक नोटिफिकेशन आसो तापर आम देखा नॉन फाइनाइट वर्ब योटा करवा ओके सो थैंक यू ऑल गॉड ब्लेस यू।